their hearts and hands and helping them live a life of utmost dignity and respect. That is a very noble cause, ma'am. We welcome you heartily. Ms. Ranjeeta Sahay Ashesh, proud wife of an army officer, is the author of Sushmanjali series. She is a poetpreneur, a certified life coach, blogger, and also Mrs. India Delhi NCR. Ma'am, that is a very wide profile. Congratulations for that. Can we please have a round of applause for that as well? In 2018, she laid the foundation of poetry organization Shritij, which is helping budding poets to prosper and turn their passion into a profession. For doing exceptional work in taking poets to non-poetic audiences, she has received many accolades and appreciation from renowned personalities of India. As a successful poetpreneur, she has been interviewed by different magazines and media houses like Doordarshan, Akashvani, etc. We're honored to have you with us, ma'am. I now hand over the session to you. Thank you so much. Hello. Check, check. Jai Hind, everyone, and that is how I greet everyone. So, can we have the presentation, please, so that you have a background of the book? That's the only reason we're having. Okay. So, this is my latest book, Soldiering On. It is based on the remarkable resilience of India's disabled soldiers. My first book, as you all know, was on the warrior widows of Indian Army. And we all know when a soldier is killed in action, media is all over the place. But there are thousands of soldiers who are also wounded. We hardly know about them. So, एक छोटी सी कोशिश की है मैंने उनके ऊपर ये book लिखने की. Next slide, please. So this is Lieutenant General Vijay Oberoi, PVSM, AVSM, VSM. He lost his one leg in 1965. And then he was a major, and he went on to become a major general, passing all the physical fitness tests that Indian Army has, beating all his course mates and fellow soldiers. He ran, he did the Pittu parade, everything. So, and retired as a Lieutenant General, Vice Chief of the Indian Army. Next, please. In the other picture, you can see with his, prosthetic leg, you have his pet dog finding comfort in his leg. So, that's one chapter. Next one, please. This is a very heart-rending story of an Air Force officer who was undergoing training and he met with a very serious accident there on duty. And he had a very bad spinal cord injury due to which he was paralyzed, his waist below. And he was told to go home and he was told he will not be commissioned ever. But then he did not give up. He fought. He put up his case in the Armed Forces Tribunal, everywhere. He wrote to the vice chief also. And he said, only my lower portion of the body can not work. My upper body, my hands, my head, my brain, my eyes, my ears, everything can work. So how can I not be of any use to the Air Force? I can do so many desk jobs. And finally, his medical tests were done, and he's the first ever officer to be commissioned on a wheelchair. Here, he's shaking hand with the chief of the army staff while being commissioned as an officer. So that's his story. This is Colonel Hari Handa. He lost both his legs. That was right after his marriage, the first photo. The second photo is very recent. He lost his legs again in 1965, fights cases for other disabled soldiers. He's a big, solid voice in the Fauji circles. But if you hear Colonel Handa is coming to meet you,
the shivers in the corridors of MOD, Ministry of Defense. So he's a one-man army there. Next one. He is Lieutenant Colonel Chinmaya Prakash. The photo on the right that you see was when he was posted in Siachen, minus 30, minus 40 degrees. And this is how he is now. He got shot on his spine, the first and second vertebrae. And now, as we see him, he cannot move except for his eyes and a little bit of head. And even for his breathing, he needs a pacemaker, which is, yeah, you can see on his neck. And that is how he breathes. And when I went to meet him, I was very hesitant. I did not want to disturb him. I just told the person accompanying me कि I think we'll just leave it, नहीं परेशान करते हैं, लेटे हुए हैं. And उन्होंने कहा कि नहीं, sir is waiting for you, ma'am. He'll be heartbroken if you don't go. बहुत ही हिम्मत करके I went, and the moment I opened the door to his cabin, he said, "Good afternoon, Ambreen, ma'am. How are you doing? How are the children?" Firm voice. I said, "Colonel Prakash, yes, ma'am. In 2002, you were in Pune. Sir was posted here. In 2015, you were there. He knew everything. Being in the media, things are there, out there on the net." I was surprised, and hum baat karte rahe. And then I said, "You're a very smart officer." And then I realized, as you can see, on his hospital bed, he's put an iPad. So with that iPad and with the help of voice recognition software, he does all his work. So I said, "You're a smart officer." And I must tell you, my book here, 70, 80,000 words, this book has been edited by him. Oh, wow. I told him, "Colonel Chinmaya, you're such a smart officer. You do all your work on the iPad. You better help me in editing my book. I'm not giving it to anyone else." And his face, it glowed like anything. He was, "Yeah, ma'am, you'll allow me to edit your book?" I said, "Why not? You've done so much of research on me. Why not edit my book?" So, "It will be an honor, ma'am." And that was the day I decided he's going to be my editor. And I wrote when my manuscript was complete, and we took months. With this condition, he used to be awake in the nights, and I used to be awake with him. So my first chapter was My Editor, My Pride. And I just sent it to him, okay, just have a look. And I'm sending it to the publisher. He said, "Ma'am, don't mention me. Mera naam mat lijiye. Let me be like other soldiers in the book. I don't want to be highlighted." That's the grit, the determination. So he's my editor, Lieutenant Colonel Chinmaya Prakash. Next. Okay, this is another one of the very inspiring stories. He's again an Air Force boy. He was a leading aircraftman in the Indian Air Force, and he used to work for the MIGs. Very rare combination of technicalities and everything, and he met with the accident at the base itself. And again, the spinal cord injury, lost everything. He also cannot function below his neck. He can breathe, but nothing else. No hand movement, nothing at all. And he was sent to Paraplegic Rehabilitation Center in Pune, and he went around meeting people. And there are people who do things, who play volleyball, who play other stuff, but then he was not interested into anything, and he went into deep depression. And then one day he saw there was another officer, again a paraplegic, who used to write articles with the help of a stylus. I've given him, that officer, a flying officer, MP Kumar, the final salute in my book. He used to hold a stylus in his mouth and write articles, and he's written a book holding a stylus and had a modified computer. And that book is called From Airborne to Chairborne. Mridul took inspiration from him, and he said, "I cannot write, but I can certainly do something else." And he started to learn to paint. And today, Mridul is a member of Hand and Foot Mouth Painters Association, headquartered in Switzerland. And
He gets a good stipend. He got his younger brother and sister educated, and his sister, he very proudly tells us, is the only most educated girl in the community. Next one. Major General Cardozo, I think we all must have heard about him. And his story is again 1971 war, Indo-Pak, the Bangladesh war. He lost his leg there, and whatever was left of his leg, a little bit of flesh, he had chopped it off with a kukri that he had because the doctors there refused to work on him. His condition was so bad. So he just chopped it off, and he was a major at that time. And then again, a fitness freak. He said, I'm not going to give up or retire from the service. I'm going to serve my nation. And with a prosthetic leg, he went on to become a major general, from a major to a major general. So that again is another story. Now this is Lieutenant Colonel U.S. Gill. He was posted in Kashmir. This is how he looks now. Can we have the next slide, please? And we can come back to this one later. Next slide, please. This is how he looked. There was an IED blast. He was sanitizing the highway, Jammu Kashmir highway, and the IED blast blew up his face. Please remove the other photograph and let's go back to the first. No, the first one. Last one. Huh. So that's him. He never gave up after 2-3 years of medical treatment, hospital, and everything. He is now doing his farming and served till he was Lieutenant Colonel. He was again a major captain when the IED blast took up in Kashmir. So that's again a very heartbreaking story. And you meet them, they're so positive and so full of energy and so full of life. कि आपको अपने ऊपर गुस्सा आता है कि कल आपको कोई कुछ बोल के चला गया and you're feeling so bad. And there you have such people who have lost their body parts and still walking with their head held high. Next slide, please. Next one. Major D.P. Singh is a known name. He was wounded in Kargil war. He lost one of his leg. And due to his injury, can we have the next slide? These are his injury-related issues, but this man never gave up. He is India's first ever blade runner. He runs with a blade attached to his left leg. So, on 9th of December, he ran 10 kilometers. It was an honor run for the soldiers killed in action. That's Major D.P. Singh for you. Next one. That's Naik Deep Chand Prakhyat. That was when he was in the service. And he lost both his legs, one arm, one hand, and 2 fingers of the other hand. But आप उनसे बात करिएगा ना, आप फ़ोन पे बात करिएगा, लगेगा ही नहीं कि किसी आप disabled आदमी से बात कर रहे हैं. Full of energy, going everywhere and anywhere and giving lectures, motivational lectures, and देख के फ़ख्र होता है. लगता ही नहीं कि दीपचंद जी को इतनी गहरी चोट आई है और इस तरह से हुआ है. So these are the soldiers I wanted to bring it to the world and tell their stories to the world कि देखो ऐसे भी हैं soldiers हमारे बीच में. Next. This is Shubham Gupta. He was a cadet. He was undergoing a training. Unfortunately, during his training, he had a very bad accident, and he could not pass out. He had to leave the academy. So Shubham is now a numerologist and an astrophysician, and he's largely into astrology also. So he's found his calling, and he takes online sessions, and a very positive guy. And he wanted to become an army officer, but then destiny had something else for him in life. Yeah, next one. This is Havaldar Sanjeev Kumar. He lost both his legs, thighs below. Right after Kargil war, there was Operation Rakshak. और घर में इनके एक छोटे भाई हैं. He is mentally not very fit.
तो चोट के 3 साल के बाद जब ये ठीक होके घर गए तो गांव में होता है ना कि वंश चलाना है, इनके ऊपर प्रेशर आ गया पेरेंट्स का कि शादी करो। एंड ही सेड मुझे किसी लड़की की वो नहीं करनी है, लाइफ नहीं बर्बाद करनी है। एंड सब ने मना कर दिया, कौन अपनी बच्ची को देगा ऐसे उसको। एंड देयर वाज दिस गर्ल कॉल्ड सुधा, शी वाज इन क्लास 10th एंड शी सेड मैं करूँगी शादी। वेरी प्रिटी लुकिंग गर्ल। एंड हर मदर टुक टू बेड फॉर 6 months। शी सेड क्या कर रही है, अपनी ज़िंदगी ख़राब कर रही है। एंड शी मैरिड हिम। शी सेड उसने अपनी हाफ बॉडी देश को दे दी है, मैं अपनी ज़िंदगी नहीं दे सकती उसको, उसकी सेवा करूँगी। So we have heroes amongst us. That's my only thing. Next one. Honorary Captain Gyanin Kumar, he was again involved in the Kargil war. Uh, he was declared dead by the Pakistanis. आके चेक करके वो हिल पे टोलोलिंग पे जाके चेक करके जूते से मार वार के चेक करके जाते थे। और ये अपनी सांस रोक के, बहुत वुंड्स थे इनके और ये पड़े रहते थे। इनको कुछ मैसेज अपने सीओ तक पहुंचाना था। एंड ही यूज्ड टू स्लाइड डाउन द हिल। पूरी पीछे से इनकी पूरी बैक इनकी रगड़ गई थी ये वो। एंड ही डिड नॉट गिव अप टिल द टाइम ही कुड रीच हिज सीओ एंड देन ही वाज इवैक्यूएटेड एंड नाउ ही इज इन हिज होम टाउन इन नागालैंड। He is Flying Officer MP Kumar, the officer I spoke to you about. He inspired a lot of people, a lot of soldiers. And this is how he was when he was in the service, and this is how he was when he was disabled. And again, he never gave up, wrote beautiful articles and newspaper columns. So one thing that I would like to say is army never leaves its soldiers behind. आपने भी सुना होगा. So we have rehabilitation centers, we have artificial limb centers where according to their likings, some job is given to them and they are rehabilitated so that they feel, you know, important, they feel good about themselves. And in the end, the book ends with these chapters. We can just have few slides. They sing also, the ones who can sing. They go for, that he's again a spinal cord injury. The photograph on the left, this man, I met him, that day he had got both his legs, artificial legs, at the artificial limb center. And there was so much of happiness on his face, कि मैम मैं ना अपने पैरों पे फिर से चल सकता हूँ. He had lost them, and then now later when his friend, he has taken up this, what do you call it, skydiving. No legs, but going for a skydiving. So that is how Indian Army keeps them motivated, the ones who want to get motivated. There are many who don't, who just go home. These are our paraplegic soldiers who go for International Paralympics Games and win medals. And this year, they won 42 medals, the highest medals ever by Indians para-athletes. Sheetal is also one of them. So the book is about them, and let's talk about it. Yeah. हिम्मत इरादों में और आँखों में आसमां रखते हैं। हिम्मत इरादों में और आँखों में आसमां रखते हैं, देखो कितने यकीन से ये हाथों में जहां रखते हैं. So, soldiering on remarkable resilience of disabled soldier. First of all, thank you so much for touching this untold story. And it's marvelous. और ये book अभी मैं पढ़ चुकी हूँ. And I request everybody to go through the book. अभी आप Mrs. Zaidi ने अभी session लिया ही है. And today is 14 Jan Veterans Day also. So what a great day to discuss about our soldiers. तो Mrs. Zaidi, just one question. सबसे पहले ये सब कैसे, what was the thought behind it, and ये आपने क्यों चुना ये subject? See, Ranjeeta, you're also an army officer's wife. So we are exposed to these circumstances, widows especially. As army wives, we look after them, their children. But disabled soldiers का बहुत ज़्यादा हम लोग का नहीं होता है ना, exposure बहुत ज़्यादा नहीं होता है. So one day while watching TV,
some controversy regarding the disability pension. And there was General Cardozo on one of the interviews, and he just said, they don't care about us. No one cares about us. And that felt like a deep gash. ऐसा लगा जैसे सीने में ना किसी ने खंजर डाल दिया है कि इनके बारे में केयर नहीं करेंगे तो किसके बारे में करेंगे, राइट? सो स्पार्क रंजीता वहीं से आया कि नहीं, आई हैव टू वर्क फॉर देम, एंड दैट इज हाउ माय जर्नी स्टार्टेड. मिसेस जैदी, आजमाना चाहता था वो तूफान उस पेड़ को, आजमाना चाहता था वो तूफान उस पेड़ को, सिरे से सतह तक झकझोर के रख दिया मगर तोड़ नहीं पाया. हमारे रन बाकुरों की इतनी भावुक कहानियाँ, हर हादसा और उसके बाद उससे उबरने का अदम्य साहस. और इस किताब में एक नहीं अनगिनत फ़ौजियों की ऐसी कहानियाँ हैं, और आपने सबके साथ आप मिले हो, और कौन सी ऐसी कहानी या ऐसी वास्तविक सच्चाई जिसने आपको झकझोर के रख दिया? मैं जब आई स्टार्टेड ट्रैवलिंग अराउंड एंड मीटिंग पीपल, एक सोल्जर से, डिसेबल सोल्जर से दूसरे के कांटेक्ट मिलते थे, कुछ बात करने के लिए तैयार होते थे, कुछ नहीं होते थे. और मैं पुणे में गई. पुणे, आई कॉल इन माय बुक आल्सो, आई हैव मेंशन्ड डिवाइन अबोर्ड फॉर द डिसेबल्ड सोल्जर्स. तो वहाँ पे एक थे सोल्जर, और बहुत दबंग, वेरी पॉजिटिव, वेरी गुड, लेकिन और सबको इंस्पायर करते फिरते थे. पैराप्लेजिक सेंटर में थे वो, और उनके साथ ये हुआ था कि वो अपने घर नहीं जा पा रहे थे. वो घर गए थे तो कुछ महीने रहे, और उन्हें लगा कि वो सब पे बोझ बन रहे हैं, एंड ही डिड नॉट फील कि इट्स हिज ओन फैमिली. तो उन्होंने फिर से चिट्ठी लिखी पैराप्लेजिक सेंटर में कि मैं फिर से आ सकता हूँ क्या. बहुत बेचारे बहुत होपफुली अपने अपनों के बीच में गए थे. तो फिर वो यहाँ वापस बुला लिए गए, बट उस चीज़ ने उनको तोड़ दिया कि मतलब जब तक मैं था, मैं कमा रहा था, मैं घर पैसे भेज रहा था, मैं इम्पोर्टेंट था. अब मैं सबके लिए एक लायबिलिटी बन गया हूँ, मैं किसी के काम का नहीं हूँ, तो अब कोई मुझे रखना नहीं चाहता. अब यही मेरा घर है और ये सब मेरे फैमिली है. तो वो सुन के थोड़ा अफसोस हुआ. गैर करें तो करें, मतलब है ना, अपनों से एक्सपेक्टेशंस होते हैं. तो वो एक स्टोरी थी जिसने बहुत मूव किया. फ़र्क सिर्फ जज्बे का था, फ़र्क सिर्फ जज्बे का था. तुमसे ज़िंदगी खेल गई और ये ज़िंदगी से. ये बुक मैं पढ़ रही थी तो आप हर फौजी के पास आप गए हो, कोई साउथ में है, कोई नॉर्थ में, यू हैव ट्रैवल्ड एक्सटेंसिवली. एक एक फौजी से मिलना, उनके पास बैठना, उनके दर्द को सुनना, उनसे रूबरू होना कितना मायने रखता है. और यानी इट्स अबाउट एक्सटेंसिव रिसर्च. और कहाँ तक दर्द, यानी आप अपनी जर्नी को आप कैसे आप डिफ़ाइन करोगे, आप कैसे बताओगे? सबसे मिले आप, और ये कैसे, क्योंकि इट्स नॉट इजी टू गो एवरीवेयर. तो ये डिसीजन क्यों था सबसे मिलना? क्योंकि बहुत सारी ऐसी किताबें होती हैं कि आप ऊपर ऊपर से आप छानबीन करके आप लिख देते हो, पर हर किसी के घर जाके पर्सनली बात करना, इंटरेक्ट करना, how much it matters. फर्स्ट ऑफ ऑल, दीज आर ऑल ट्रू अकाउंट्स. मैं जब तक इन लोगों से मिलूंगी नहीं, इनके साथ वक्त नहीं बिताऊंगी, आई थॉट कि आई विल नॉट बी एबल टू डू जस्टिस टू माई सोल्जर्स. तो उनके साथ मिलना ज़रूरी था. और यहाँ पे हम बात सिर्फ उनकी नहीं कर रहे थे, है ना, जो घर में हैं, जो वापस चले गए हैं और थोड़े से वेल ऑफ हैं और अपने डिसेबल्ड सोल्जर्स को लुक आफ्टर कर पा रहे हैं, तो उनकी फैमिलीज़ के साथ भी बैठना ज़रूरी था. क्योंकि उनके ऊपर जो अभी चट्टान जैसा जो एक उनका एक आदमी था, द हेड ऑफ द फैमिली, एकदम से डिपेंडेंट हो गया है. तो बड़ा ही झटका होता है. तो उन्होंने इस चीज़ को कैसे लिया उनकी. तो और एक सिटिंग में ये चीज़ें नहीं होती, एकदम से इमोशंस बाहर नहीं आते. पहले आप कई बार फ़ोन करते हो, फिर बैठते हो, फिर कुछ दिन बाद जाके फिर मिलते हो. एंड मेरा हमेशा का एक रूल रहा है कि अगर ट्रू अकाउंट्स हैं, अगर मैं आपके बारे में लिख रही हूँ, जो फाइनल मेरा ड्राफ्ट होगा मैं फिर से आपके पास भेजूँगी कि आप देखें, बिकॉज ये आपकी स्टोरी है.
मैं सिर्फ कंपाइल कर रही हूँ. इट हैज़ टू गो योर वे. सच जाना चाहिए. मुझे मिर्च मसाला लगा के कोई ब्लॉकबस्टर मूवी तो बनानी नहीं है. मुझे अवेयरनेस क्रिएट करनी है. टाइम लगा रंजीता, काफ़ी मेहनत भी लगी और इमोशनली भी बहुत ज़्यादा ड्रेनिंग होता था. मैंने वही आपका एक चैप्टर देखा, आप सुधा के बारे में आपने बताया, एंड काफ़ी सारे ऐसे फौजी हैं जिनकी फैमिली एज अ सपोर्ट भी खड़ी रही, बिल्कुल क्योंकि जैसा आपने जो कहानी बताई कि फैमिली जैसे नहीं एक्सेप्ट करती है, और यहाँ पे जो सक्सेस स्टोरीज थी, फैमिलीज व बिल्डिंग ब्लॉक्स, तो एज अ लेडी, और ये जो लेडीज़ जो झेल गई, जो कर रही हैं, और साथ में जो सपोर्ट में खड़ी हैं, जो छोड़ के नहीं गए, जो बिल्कुल कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं, तो आपने अपने इंसिडेंट्स भी लिखे हैं कि वो बहुत प्यार से उन्होंने बात भी करी, और उन्होंने, किसी ने क्रिब नहीं किया, किसी ने कंप्लेन नहीं की, एवरीबडी वॉज हैप्पी. तो वो बॉन्ड हस्बैंड वाइफ का, यानी आप कैसे उन सब से आपने डील किया और कैसा लगा आपको? तुमने सुधा की बात की, तो सुधा के बारे में मैं ये बताऊँ, उसने शी मैरिड व्हेन शी वाज इन क्लास 10th. उसके बाद उसने अपनी स्टडीज़ भी कंप्लीट की. उसने मास्टर्स हाँ किया जी. और शी इज़ वर्किंग नाउ. शी इज़ वर्किंग नाउ इन आर्म फोर्सेस मेडिकल कॉलेज इन दिल्ली. अपार्ट फ्रॉम सपोर्टिंग हर हस्बैंड, एलिंग इन लॉज, वो भी अभी उन लोग के साथ ही शिफ्ट हो गए हैं और बच्चे हैं. एक 12th में है, एक 9th में है और कर रही है. और ये जो है संजीव जो है अपना अभी कभी ड्राइव उस पर राइड पे चले जाते हैं, उनकी मॉडिफाइड स्कूटीज होती हैं, उसको भी सपोर्ट कर रही है. एंड यू नो वी वुमेन आर या वॉरियर्स. वही मैं बोलना चाह रही हूँ कि आपने वॉर विडो पे भी लिखा, तब भी एक साहसी नारी शक्ति का आपने परिचय दिया था, और अभी भी जब मैं इन सारी कहानियों को पढ़ रही थी, तो वुमेन हैव बीन ऑलवेज दी, बोलते ना, बैकबोन. तुमने जिस दर्द को महसूस किया, वो ज़िंदगी का छोटा सा कतरा है. ख्वाहिशों को पंख लगा कर उड़ जाओ कि आने वाले हर गम को तुमसे खतरा है. अभी आपने पैरालंपिक के बारे में बताया, उसके बाद आप भी फ़ौज से हो, मैं भी फ़ौज से हूँ, एंड वी नो आर आर्मी एंड एवरी डिफेंस एंड गवर्नमेंट, एवरीबडी इज़ वर्किंग फॉर दीज सोल्जर्स. यू वेंट टू पुणे, एंड आप स्पाइनल कॉर्ड इंजरी सेंटर में भी गए हो, इंडियन आर्मी आर्टिफिशियल लिम्ब सेंटर में भी गए हो, और पैराप्लेजिक रिहैब सेंटर में भी गए हो. तो पीपल आर वर्किंग रिगरसली टू ब्रिंग देम बैक टू मेन स्ट्रीम. तो कैसा आपका वो एक्सपीरियंस रहा, और इन लोगों से आप मिले, क्योंकि सब जगह बहुत पॉजिटिव थी वाइब्स. अपने अंग खोने के बाद भी इतनी खूबसूरती से चीज़ों को एक्सेप्ट करना और दूसरों को मोटिवेट करना, तो ये क्या काम करते हैं ये तीनों सेंटर्स, और जो हमारे पैरालंपिक्स हैं उनकी खुशी, उनके पिक्स अभी आपने शेयर किए, तो वो मेडल, वो उनको एक नया मिल गया, कोई गोल मिलना, तो ये सब कैसे, वो लिम सेंटर एंड हाउ इट वर्क्स, यू मेट विद द डॉक्टर्स एंड ऑल दैट, तो व्हाट इज द एनवायरनमेंट ओवर देयर? सी रंजीता, एनवायरनमेंट देयर इज वेरी गुड. ठीक है, क्योंकि सारे एक से हैं. किसी ना कोई बॉडी पार्ट खोया हुआ है ना, सब डिसेबल्ड है. लेकिन उस बाउंड्री से अगर आप बाहर निकले तो एनवायरनमेंट बहुत खतरनाक है. वी आर नॉट काइंड टू देम. अभी भी पॉलिसीज हमारी ऐसी हैं, रैम्प्स नहीं होती, बेसिक जगहों पे रैम्प्स नहीं होती, परेशान होते हैं वो लोग. बल्कि देयर वाज अ सेशन ऑन द वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे 3 दिसंबर, और वहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एक जूनियर मिनिस्टर आए हुए थे. तो उन्होंने ये कहा था कि बहुत बहुत ही प्यारी बात कही थी कि हम ये सब रैम्पिंग अप की बात करते हैं और सबका वो बार्स की बात करते हैं. हम ऐसा क्यों नहीं करते कि हम कॉलेजेस में आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग में और वहीं से शुरू करें. हमारी शुरुआती उधर से की तो होना ही है. जैसे ही स्टेज पे आने के लिए 2 सीढ़ियाँ बनानी है, तो हमें एक रैम्प भी बनानी है, क्योंकि हमारे साथ डिसेबल सोल्जर्स भी हो. अगर वो थॉट प्रोसेस चेंज हो जाए ना, थोड़ा सा अवेयरनेस आ जाए, तो आई थिंक बहुत सारे हमारे डिसेबल सोल्जर्स के मुद्दे सॉल्व हो जाएंगे. और बड़ी बात यह है कि डिसेबिलिटी जो आई है वो
इन लाइन ऑफ ड्यूटी, देश की सेवा में आई है। वो लोग बहादुर रणबांकुर थे, सोल्जर्स थे, और देश के लिए उन्होंने अपने को समर्पित किया है। नेमत खुदा ने बख्शी चरागों सी इन्हें, नेमत खुदा ने बख्शी चरागों सी इन्हें, जलाकर खुद को इन्होंने खुशियाँ बांटी हैं। जब आप इन फ़ौजियों के बारे में बता रही थी, बुक में कई फ़ौजियों का जिक्र है जो समाज की उपेक्षा का शिकार होते हैं। जिन लोगों के लिए लाइन ऑफ ड्यूटी में इन लोगों ने अपने अंग गंवाए हैं, उस समाज का तंज उन्हें ज़्यादा कष्ट देता है कि कमेंट्स हो गए। उसके बाद जैसा आपने गांव की बात करी थी, 26 जनवरी 15 अगस्त को हिंदुस्तान की हर गली में रंग बिरंगा तिरंगा फहराते हैं। बहुत देशभक्ति के गीतों से गूंजती है सारी गलियां। तो इन सिपाहियों को, इन सोल्जर्स को कहीं ना कहीं भुला दिया जाता है। एज अ सोसाइटी व्हाट आर आवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, और एक समाज की तरह हमें कैसे अपना नज़रिया बदलना है ताकि ये कंफर्टेबल रहे। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन तुमने उठाया रंजीता, क्योंकि हमने अभी एक फोटोग्राफ देखी थी नायक दीपचंद प्रख्यात की, जिनका मैंने कहा था हम फ़ोन पे भी बात करेंगे तो पता नहीं चलेगा। उनके साथ क्या हुआ था, वो कारगिल वॉर में गए, थोड़ा बहुत इंजरीज आई, ठीक ठाक वापस आ गए। वो नॉर्थ ईस्ट में कई मिशंस पे, ऑपरेशंस में गए, ठीक ठाक वापस आ गए। राजस्थान में पोस्टेड थे, एम्यूनेशन डिपो में ड्यूटी लगा था, और वहाँ पे ब्लास्ट हो गया था। ठीक है, वहाँ पे ही लॉस्ट बोथ हिज लेग्स, हिज राइट हैंड एंड फ्यू फिंगर्स। तो फौज में दो दो वो तरह की पेंशन्स होती हैं। बैटल कैजुअलिटी, जो वॉर या वॉर लाइक सिचुएशन में होती हैं, एक्सीडेंट्स इन द लाइन ऑफ वो सीआई ऑप्स, या फिर ऐसे जैसे गाड़ी पलट गई या समथिंग, तो वो फिजिकल कैजुअलिटी होती है। नायक दीपचंद प्रख्यात था तो ड्यूटी पे ही ना, उसको अभी तक बैटल कैजुअलिटी पेंशन मिल रही है जो बहुत कम है। तो बातें होती थी, बहुत होती थी, क्योंकि चैप्टर लिखनी थी, 2-4 कॉन्वर्सेशंस में तो हो नहीं सकता था। हमेशा दबंग रहते थे मेरे साथ, सभी के साथ जिससे भी मिलते थे। एक दिन वन मोमेंट ऑफ वीकनेस उनके मुंह से निकल गया, मैम ये भगवान ने आधे शरीर के साथ छोड़ दिया है, पूरे ही उठा लेता, वाइफ को गैस एजेंसी या पेट्रोल पंप मिल जाता। तो अब बच्चे बड़े हो रहे हैं, किसी को कनाडा जाना पढ़ने के लिए, किसी को बड़ा फ़ोन चाहिए, इतनी सी पेंशन में क्या करूँ। तब आपको लगता है कि अवेयरनेस, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, देखिए यहाँ हम ना फौज को दोषी ठहरा सकते हैं, ना गवर्नमेंट को कर सकते हैं। जो पॉलिसी बना रहे हैं उनको पता ही नहीं है कि इस तरह के लोग हैं और इनकी क्या मुश्किलात हैं। So that is one major reason that we have to create awareness amongst the citizen, and that was my reason behind this book. Disability, you have written disability is in the mind, and about MP Singh, उन्होंने जो पेंटिंग्स माउथ ऑर्गन से जो उन्होंने बजाया था, एयरबॉर्न टू चेयरबॉर्न, He wrote. ही रोट दैट, एंड पेंटर जिन्होंने माउथ पेंटिंग करी हुई है। तो जब एक जैसे हम लोग एज अ सोसाइटी, समाज, छोटी सी बात पे स्ट्रेस्ड हो जाते हैं और उसका तिल का तार बनाने में टाइम नहीं लगता, और यहाँ पे हाथ पैर ना होने पे भी आप कैसे अपने, उन्होंने सीखा जो पेंटिंग का आपने बताया, 6 महीना ही डिड द कोर्स ऑल्सो, ही टुक इंटरेस्ट, अपने को वापस बैक टू लाइफ लाना। तो फाइटिंग स्पिरिट एज अ सोल्जर, यानी ऑन वॉर एंड आफ्टर दैट ऑल्सो, तो वो कितना इम्पोर्टेंट रखता है, यानी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लिए भी, क्योंकि मुझे लगता है कि सोल्जर्स दे आर बॉर्न विथ एक्स्ट्रा ग्रिट एंड डिटर्मिनेशन, और एक वो कहीं ना कहीं वो जज्बा रहता ही है। वो लोग कुछ ना कुछ सीख के, यानी दे डोंट लेट देयर लाइफ स्लिप ऑफ। तो वो क्या, आपने पेंटिंग्स भी देखी हैं, आपने उनसे बात भी की, और उसके बाद वो शायद फॉरेन भी गए थे, तो उनकी खुशी, एंड देन पैरालंपिक के जो हमारे विनर्स हैं,
तो कैसे उन्होंने अडेप्ट किया, कैसे उन्होंने चेंज किया कि अब ये नहीं तो ये करके, यानी व्हाट इज़ द पॉजिटिविटी यानी मंत्रा? There's no single mantra because there were moments also in their lives कि give up करने का दिल चाह रहा था, नहीं कर पाएंगे, ब्रश गिर जाता था मुंह से, नहीं हो पाएगा, 2-3 दिन बैठे रहे. तो there's a whole जहाँ पे जो इनके रिहैबिलिटेशन सेंटर्स हैं, तो काउंसलिंग सेंटर्स भी हैं, काउंसलर्स आके फिर बात करेंगे. जो टीचर है वो उनका बॉम्बे से आता था माउथ पेंटिंग का, तो ही यूज्ड टू गिव देम अ ब्रेक, है ना, कहीं उनको ट्रिप पे ले गए, कुछ वो किया. सो इट्स अ कलेक्टिव एफर्ट फॉर देम हु आर देयर इन द रिहैबिलिटेशन सेंटर्स. बट फॉर द वंस हु हैव गॉन होम and who are leading a good life, it's basically the family, which is the rock solid support and उनके जज्बे का वो है. और अभी भी कहते हैं कि आज खड़ा कर दो, we will beat any able bodied soldier left right and center. तो ये जज्बा है उनका. तो yes, the training that Indian Army imparts plays a very big role. वो लहरें, वो शोर, वो समंदर की बेफिक्री, वो लहरें, वो शोर, वो समंदर की बेफिक्री, हलचल ने उसकी आईना दिखा दिया. थैंक्स फॉर राइटिंग सच वंडरफुल बुक. और इफ़ एनी क्वेश्चन ऑडियंस वांट टू आस्क, और सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अमेज़ॉन से बुक ज़रूर ऑर्डर करिए, आप लोग पढ़िए. एंड द मिनिमम यू कैन डू, सोल्जर्स के उसमें डिटेल्स दिए हुए, कॉन्टैक्ट देम, बात करिए और जानिए कि ज़िंदगी का ये कौन सा सफ़र है जो बहुत ही खूबसूरती से वो लोग जी रहे हैं. माइक माइक ऑन कर दीजिए, दूसरे वाले माइक्स. Hello, hello. हाँ जी. Ma'am, hats off to you, and the way you presented about the presentation about your book tells me how good the book will be. Really beautiful. My question is slightly off the track, but on the track. It's about Paralympic Games. Paralympic Games were started in 1948 for the World War victims by a neurologist doctor. Gradually, they have come nearer with the Olympic Games, main Olympic Games. But still, they are being played with a duration of 1 month. In the same city, same country, same city, same venue, but after 1 month. I have been running a campaign, why not bring these two games together? This will give an inspiration to each other. It will be a mutual inspiration for both of them. And the public will also see. Just now you said that people don't care about them. They don't get the deserved, the required attention from the society. So will that not be helpful for that? That will be fantastic. वही तो है कि इनको मेन स्ट्रीम में लाना है, इनको अलग करके नहीं छोड़ना है ना. कि पैरालंपिक गेम्स अलग हो रहे हैं, ओलंपिक अलग हो रहा है, तो एक साथ जोड़ के अगर हम एक फोरम में ले आएंगे तो क्या बात. Ma'am, thanks for the support. I've been running a campaign for that, and I have been writing letters to the Prime Minister, to the Olympic Committee. Recently, there was a meeting held in Mumbai also. May I request you, since you have worked so much in this field, you may, in whatever way you feel apt, please do something for that. Because the next, after this 24 Olympics, India has bid for the hosting of the Olympics. And we are hopeful that we'll be getting the this tag for us, maybe in Gujarat somewhere. Yes, Sure. sir. Your support and everyone's support. Yes. Obviously. So please, you yourself also start a campaign for that. That Paralympics and Olympics should be held together, not separately. Thank you. Wonderful thought. Thank you, sir. थैंक यू फॉर द सजेशन. आई एम श्योर चाय पे चर्चा होगी तो इस बारे में, और ऑथर साइनिंग डेस्क पे ज़रूर आप डिस्कशन कीजिएगा एंड बुक लेके साइन कीजिएगा. 2 हाथ खड़े हो रहे हैं, एक पहले सर के पास आएंगे, फिर हम ज्योति मैम के पास आएंगे. यस सर. Madam, I'd like to add that the essay Chairborne to Airborne was written by MP Anil Kumar and is a part of English Reader Class 7th in Maharashtra. And then his book Born to Fly was an autobiography by his course mate Nitin Sati. And I think you showed a picture where he's writing something with the stylus. I wanted to add that can we have a small essay of your book to be added to the Madhya Pradesh English readers? Is it possible? Definitely, sir. Please. Yes, I think
I'll share. That would be a big service. बिल्कुल बिल्कुल I sir. think that can be done. Absolutely. Anything for our soldiers and our Okay. countrymen. Thank you so much, sir. Please, mic आगे ले आइए. Yes, round of applause. Jyoti ma'am, we have one yet. Sorry. Yeah, she's also an army wife. And I think, as far as I recall, her husband retired as a colonel from the Indian Army. Yes, ma'am, please. So Ambreen is a dear friend, and my heart is full. You know, looking at the presentation, the book, I have always known her to be a very soulful person, and she had been sharing her journey of writing the book. And since the time she thought of writing, I mean, I feel honored that she shared with me that I feel strongly about her. And I just have to say loads of blessings, Ambreen. And I just have a very small question. How has this writing this book changed you as a person? It changed me completely. Warrior Widow had shaken me from within, but this book has changed me completely. And as अच्छा, all these soldiers are spread all across the country. ठीक है, ऐसा भी नहीं कि इनका कोई WhatsApp group है या किसी तरह से लोग जुड़े हुए हैं. One line that came out of everyone's mouth was, "Ma'am, disability is in the head." जिस दिन मैंने सोच लिया मैं disabled हूँ, I will not be able to take a single, breathe. I won't be able to breathe even. So तब से मिसेस पांडे मुझे ये लगने लगा कि जब ये लोग इतने बड़े बड़े अपने जख्म और इतने ट्रॉमा को लेके इतना सर ऊंचा करके जी सकते हैं, तो हम भी जी सकते हैं. हम छोटी छोटी बातों को लेके नहीं बैठेंगे और करेंगे कुछ ऐसा कि काम आ सकें किसी के. Thank you for being the voice of our soldiers, Ambreen, and all the very best to you. Thank you, Mrs. Pandey. Mrs. Amita Singh. Yes, yes. Amita ji, please. I probably should not have taken the mic. My throat is bad. But Ambreen, every time you just shake me, you say you changed. Well, I am unable to even speak properly. I now know why my father-in-law, who fought the world wars also, discussed probably each and everything with me, but refused to talk about the wars he fought. Just after getting married, I borrowed books for him from the British Library. He asked me to for him on world wars and various journals. He took them from me, one by one put them aside without even a thank you. And I was shocked because that was the norm in the house, thank yous and please and everything. And later my mother-in-law, who was Burmese, she called me aside and she said, he never talks about it and he doesn't want to read about it anymore, Amita. He's been in it. Now I know what he must have seen, that he refused to acknowledge the books I had bought from him. Because if half of what you've written is what he saw, well, if it's changed you to just listen to it, what it must have done for him to see it and live through it. Thank you for this. But I have a big, I want to say, couldn't somebody have gathered more youngsters to listen to this, please? For God's sake, any session on a movie or this thing would have a full house. This is real heroes. Why are these? Thank you so much, Cookie. I mean, I know him only as Cookie, for saying this, that this should be a chapter in this. I think there should be a chapter in each year of the school for one story from the army of the real heroes of Indian Army. Why should not? And you've already done half the work. All you need to do is to put it into the education system. That's it. Thank you for this, Ambreen. अमिता जी एकदम सही कह रही हैं. जितने भी ज़्यादा लोग, खास करके यंगस्टर्स, ये बात सुने, इस बात को समझें, कम होगा जितने ज़्यादा सुने. Thankfully, we are also live online, and I am hoping कि बहुत सारे लोगों ने live भी ज़रूर इस कहानी को सुना है. Do we have any more questions?
यस, यहाँ पे और फिर पहले मीनाक्षी मैम के पास और फिर पीछे. यस. यस. हाँ, मैम को पास कर दीजिए. टुवर्ड्स द राइट. यस. Incidentally, I am also an army wife. So, what I see over here is people related to army are only attending this particular show. We could have done better. Anyway, my question is that we do have soldiers and officers and other people, even civilian employees of the defense forces who have this kind of problems, disabilities. They may be on duty or off duty. But we have never been able to portray their problems to the ministry, to the Public Service Commission, to the people who really could make a difference in making the lives of these people a bit better. At least the payment, the pensions that they get, at least their rehabilitation could have been better planned. So could you or have you introduced this kind of a solution in your book? If you could do that, it would have been far better. Yes. I have a portion in my book which talks about the gaps and anomalies. All right, so it is there. And I must tell you, just as my book was released, there was this strong controversy over the disability pension and benefits, which is still going on. And most of my soldiers here were very vocal about it and very upset and very disheartened. And I used to talk to them, they used to message me and सब वो चल रहा था हम लोग के बीच में. और एक दिन बहुत ही गुस्से में 180 plus 87-year-old officer called up, you go and do this, and he was very upset कि मतलब ये लोग कैसे हमारे छोटे से बेनिफिट से कितना बजट बचा लेंगे, क्यों काट रहे हैं, क्या हो रहा है. Manohar Parrikar was a fantastic defense minister, and he had taken back all the cases related to the disabled soldiers. But now all the cases are being reopened. तो ये सब हो रहा था. Plus there's this again new policy कि first 10 years of the service, उसमें अगर कोई soldier disabled होता है, he will not be called a disabled soldier and he will not get a disability pension or benefits. That again is a question mark, because अगर आप कारगिल war देखें तो उसमें हमारे सारे lieutenants and captains had gone. तो उसी उसमें I took out the chronology of events, spoke to a couple of lawyers, Fauji lawyers, Major Navdeep Singh, आपने नाम सुना होगा, he's written a forward for my book. तो वो करके I wrote it down and I asked, I write for Times of India also, and I asked from Manohar Parrikar to Rajnath Singh, what changed, because the government has been the same. तो हुआ क्या, ये चीज़ें कैसे बदल गई और सब कुछ. And 2 days later, मतलब मेरे कहने का मतलब, मैं ये किस्सा आपको इसलिए बता रही हूँ कि ये किताब से ही नहीं ख़त्म हो जाता है, मैं जुड़ जाती हूँ. It becomes my passion. और it was published in Times of India. और 2 दिन के बाद मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से फ़ोन आ गया कि मंत्री जी आपसे मिलना चाहते हैं. नहीं, डर के मारे बुरा हाल था. प्लीज़ तालियां मत बजाइए कि क्या होगा. I asked my husband, will you come along? He said, no, it's your work, you go, तुमने लिखा है, जाओ. हमने कहा अच्छा ठीक है, जाते हैं. So he had written a forward for my first book, and फिर उन्होंने मुझसे वो मेरी first book भी हिंदी में translate करवाई थी हिंदी में कि ये दिलों तक पहुंचनी चाहिए. गई उनके पास तो बोले जी कैसी हैं. मैं कहा सब बढ़िया. काम बढ़िया चल रहा है आपका. मैं कहा सर आपका आशीर्वाद है. फिर उसके बाद दूसरी किताब भी आ गई आपकी. मैं कहा जी सर, हम तक तो नहीं आई. मैंने कहा सर आप कहते हैं ना हिंदी भाषा दिल को छूती है, तो जैसे ये हिंदी में आएगी मैं आपके पास लेके ज़रूर आऊँगी. पढ़ता रहता हूँ जो आप लिखती हैं. अभी 2-3 दिन पहले आपने कुछ लिखा है. मैंने कहा जी सर, ये राजनाथ सिंह जी हैं. तो बोले आपको मैंने कहा सर देखिए आई एम सॉरी अगर आपको बुरा लगा हो, बट मैं इमोशनली अटैच हो गई हूँ अपने सोल्जर्स के साथ. व्हाट हर्ट्स देम हर्ट्स मी, तो इसलिए लिख दिया. और अगर हम कुछ कर सकते हैं तो सर देयर इज़ नथिंग लाइक इट. सी you must also know कि he is the highest person I could go to, है ना, डिफेंस मिनिस्टर है, सर्विंग है. तो he said आपको लगता है मुझे नहीं पता है क्या.
मुझे जो सोशल मीडिया पे हंगामा मचा हुआ है, ट्रेंड कर रहे हैं ये टॉपिक्स और अखबारों में खबरें आ रही हैं, मैं नहीं पढ़ता हूँ, हमारी टीम नहीं मैनेज कर रही है, लेकिन आपके चीफ, आपके सीडीएस मुझे रोज़ रिपोर्ट करते हैं, एक दिन छोड़ के रिपोर्ट करते हैं, उन्होंने आज तक ये मुद्दा नहीं उठाया। मुझसे ऑफिशियली तो कोई बात करे, है ना? एक चिट्ठी आप मुझे भिजवा दीजिए अपने चीफ से, मैं क्यों अपने डिसेबल्ड सोल्जर्स को निराश करूँगा? I came back and he was right. He was absolutely right. So we have to stand up for each other. That is it. Of course. अब बताना चाहिए। Yes. Yes, Meenakshi ma'am. Ambreen, it's only a request to you. It's not only to you. It could be to anyone else also. मेरा focus area is right now on आपसे बात करते हुए, आपसे सुनते हुए, is on the wives of those who go back disappointed, disheartened, lose hope, and go and stay in their villages, lost. उनकी बीवियाँ कैसे, उनकी बीवी और बच्चे कैसे मैनेज कर रहे हैं, उनको हम लोग किस तरह की सपोर्ट दे पा रहे हैं? Like you're doing something for the war widows. You're talking of widows. But those who are surviving and उनके husbands disabled हो गए हैं, उनके लिए what is the anything that is happening or we can do? See, there is a Zilla Sainik board which takes care of them. But वही है मीनाक्षी जी, जितना करो कम है. So there's a soldier in Jammu, और उसका जो गांव है वो पहाड़ों पे है, वो नहीं जा सकता वहाँ क्योंकि वहाँ पे व्हील चेयर नहीं जा सकती. तो उसने फिर जम्मू में ही छोटा सा एक अपना रेंटेड अकोमोडेशन लिया हुआ है और वहीं रह रहा है. एंड तो अमरीन, मेरा जो आपने पहले बात की थी ना, there is somebody who can reach out by his voice. I mean, there are so many inspiring stories. Now we cannot take books across to people. तो ये छोटे-छोटे वीडियोस के द्वारा, WhatsApp वीडियोस के द्वारा, if we can just, send these inspiring stories across to the families of those who have given up. One, and then also the stories of those who are fighting it out, still battling because their husbands give up the battle, right? And so both need to be inspired. One needs to be supported and the others to be inspired. So maybe शुभम गुप्ता था वो बच्चा, वो तो चलिए ट्रेनिंग के दौरान ही उसका हुआ. Right. His father is under depression. देखिए वो रात में उठ के दीवार से अपना सर फोड़ते हैं. He's still not accepted it. It's been 10 years. Yeah. So we use the technology today to reach out because हम लोग सब जगह नहीं पहुंच सकते, but the voice of media does, social media does. Yeah. Thank you. Thank you so much, ma'am. Thank you so much, dear ladies, for that heart-wrenching discussion, I should say. और कहीं ना कहीं ये जो तस्वीरें हमने देखी, ये देख के हमें पता चलता है कि हिम्मत का भी एक चेहरा होता है. और जैसे कि अमरीन जी कह रही थी कि हम लोग आए दिन छोटी छोटी शिकायतें कर सकते हैं. मुझे मेरी फेवरेट जैकेट नहीं मिली, फेवरेट जूते नहीं मिले, दाल में नमक कम था और सो एंड सो. पर इस डिस्कशन से हमें पता चलता है कि हमारी शिकायतें और किसी और की शिकायतों में कितना फ़र्क हो सकता है. हमारी ज़िंदगी और किसी और की ज़िंदगी कितनी मुश्किल हो सकती है. अगर हमारे पास एक पत्थर है तो शायद कोई पहाड़ रख के बैठा है अपने पास मुसीबतों का, और तब भी मुस्कुरा रहा है, हंस रहा है, और वो कहानी हमसे आपसे साझा कर रहा है कि हम यहाँ बैठ के सुन सकें. और ऑफ कोर्स कोशिश मेरी सभी से रही कि हम सब इन कहानियों पे वीडियोस बनाएं. और वीडियोस ही क्यों, जब हम चाय पे चर्चा करते हैं, जब हम दोस्तों के साथ बैठते हैं, जब ऐसे अपने कंफर्ट लेवल में बैठे रहते हैं, तब अगर हम दुनियादारी के बारे में बात करते हैं तो ये एक ऐसा टॉपिक है जो ज़रूर हमारे दिल को छूना चाहिए और लोगों तक पहुंचना चाहिए. एक बार ज़ोरदार तालियां उस दिल खुशनुमा और उस बहुत ही सेंसिटिव, बहुत ही दिल को छू जाने वाले डिस्कशन के लिए. फॉर द सोल्जर सोल्जरिंग. और अमरीन जी तो पहले भी BLF में काफ़ी रूबरू होती रही हैं ऑडियंसेस के साथ, और जब हमें याद है द विडोज़ ऑफ वॉर, एंड हमेशा आर्मी वाइफ्स के लिए एंड स्पेशली आर्मी पर्सनल्स के लिए अपनी आवाज़ बुलंद करती आ रही हैं. एंड मैम, इट्स अ प्लेजर फॉर अस टू हैव हैड यू हेयर. एंड रंजीता मैम के लिए भी तालियां होनी चाहिए. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर. मैं मीनाक्षी जी को इस मंच पे आमंत्रित करना चाहूँगा, द फाउंडर मेंबर ऑफ सोसाइटी फॉर कल्चर एंड एनवायरनमेंट. रिक्वेस्ट करूँगी वो मंच पे आएँ और अमरीन जी को और रंजीता जी को हमारे तरफ से एज ए टोकन ऑफ लव एंड रिस्पेक्ट मेमेंटो पेश करें. बहुत लंबा है सिद्धार्थ. मुझे एक चीज़ और याद आ गई. बच्चे क्योंकि स्कूल के बैठे हैं यहाँ, कहीं कॉलेजेस के भी हैं, सो मे बी आप लोगों का फोरम, यू ऑल्सो कैन रीच आउट टू children of those who got disabled. You could help in maybe
उनको पढ़ाने में, उनको साथ लेने में, उनको इंक्लूसिवनेस देने में. And maybe उसके लिए एक forum, getting those connected with the children, and then the children take them on, like we do for plant saplings, we do for animals. We also do it for children who are alive and need support and need inclusion. Wow. Adopt a soldier. Yes. She said America already has a program called Adopt a Soldier. We can do something like that. And of course, see, that is the beauty of festivals like these. जो बातें शायद हमने इसके पहले सोची ना हो, उन बातों को हमारी सोच में, हमारे मन में जगह मिलती है और हमारे डिस्कशंस इस हिसाब से आगे बढ़ते हैं. जैसा शुरुआत में हमने कहा था, टू इग्नाइट द पावर ऑफ थॉट. This is the power of thought. And of course, some wonderful efforts by Ambreen ji for gathering these stories. Yes, बिल्कुल. जो राम सिंह उर्वेती जी की पेंटिंग है, ये यही दिखाती है कि बीज है और एक पेड़ ऊपर आ रहा है, परस्पर हो रहा है. And I think that is also what the festival does. It prospers the ideas, it makes them come into being, makes living into being. Thank you so much. एंड ऑफ कोर्स मैं चाहूँगा जो लोग आप में से जितने भी यहाँ पे गेस्ट मौजूद हैं जो अमरीन जी से बातचीत करना चाहें, मैं चाहूँगा अमरीन जी आपसे निवेदन करूँगा कि